everyone, in this Java program, we will learn how to find the largest of three numbers using if-else statements and a user-defined function. First, I will write the code and then I will explain it to you in English and then I will explain it to you in Hindi. So I don't want to write the whole thing, so I will just write main.
So now I will explain. So here import java.io. This statement imports Java input output classes. In this program it is not actually required, but it is commonly used in Java programs. Now I have created a class called largest of numbers. If you see here static int biggest of 3. So this is a user defined function that takes 3 numbers as parameters and returns the largest numbers. Suppose here I have used if else conditional statement. So if my x is greater than equals to y and x is greater than and equals to z, then return x. Else if y is greater than or greater than and equal to x, or and not or sorry and greater than equal to z, then return y, else return z. So here this condition checks whether x is greater than or equal to both y and z. Here this condition will check if y is greater or equal to both x and z, or else z. So just logic is there, simple logic. If x is not greater, if y is not greater, then obviously x is greater, sorry z is greater. So after that my main here to here, the execution of Java program starts from the main method. Here I have declared variables int x equals to 5, y equals to 10 and z equals to 3. Now I will call the function which I have already here. I have created function biggest of numbers. I will call it here. After that my result will be printed. This line will be executed and my output will be printed. Now I will explain it in Hindi. java.io ये जावा के इनपुट आउटपुट क्लासेस को इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे हम लार्जेस्ट ऑफ नंबर्स नाम से एक क्लास बना है। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे, स्टैटिक फंक्शन है ये हमारा। बिगेस्ट ऑफ 3 नेम से हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि यूज़र डिफाइंड है। उसके बाद हम उस फंक्शन के अंदर हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। इफ़ कंडीशन में हम कर रहे हैं कि अगर मेरा x y से बड़ा है और z से बड़ा है तो मैं x रिटर्न कर देना है। एल्स इफ कंडीशन में डाल रहे हैं अगर y बड़ा है x से और z से तो y रिटर्न कर देना है। और ऑब्वियसली अगर x बड़ा नहीं है, y बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा z बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम मेन मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से यहाँ मेन मेथड है और मेन मेथड लिखना हो एक्लिप्स में जस्ट आप मेन कंट्रोल स्पेस एंटर लिखेंगे आ जाएगा। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मेन मेथड के अंदर हम 3 वेरिएबल लेंगे x, y और z नेम से, जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। x मेरा 5 है, y मेरा 10 है, z मेरा 3 है। अब हम जो फंक्शन हम यहाँ पे बनाए थे बिगेस्ट ऑफ 3 नेम्स, अब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मेरा यहाँ नेक्स्ट लाइन में फिर मेरा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो लार्जेस्ट हम जो फंक्शन को कॉल किया हम उसको स्टोर किए लार्जेस्ट नेम से एंड देन उस लार्जेस्ट को हम यहाँ पे कॉल किए एंड इज़ अ लार्जेस्ट नंबर। सो 10 इज़ माई लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे 10 मेरा लार्जेस्ट नंबर है तो वो प्रिंट हो जाएगा।